So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss the entire month of current affairs, entire month of February 2025 current affairs. In yesterday's class, we had discussed the January month current affairs. So today we will discuss February current affairs. So let us begin. Am I audible, visible? Is everything fine? Okay. So January and February I'll be covering. And tomorrow we'll be having March class for with Govind sir, and then April, like that. Okay. So pure complete month ka we are covering the current affairs. So if you want to see actually the playlist where we have already conducted the previous classes, so go to the playlist. First, please subscribe to the channel. Go to the playlist. Yeah, we are providing this. You click on view full playlist and you will get this yesterday's video also. And this is February's video. So whenever we'll put March video, April video, it will come here. Okay, so that you can watch it. This is monthly current affairs. In one class, we are revising the entire month in actually slightly fast manner. Okay, so fast chalenge hum log so that we can cover the entire thing. Yes. Good evening, Priyanshi, Rani. Welcome to the class. So let us begin with the question. The first question is: recently, President Draupadi Murmu has approved conferment of Dash Padma Awards. I hope you are aware. So Padma Awards are actually generally announced around 26 January ke aaspas, but it is given on in April. That's a different matter. It was given somewhere around in April, but it is announced around Republic Day. Okay. So Padma Awards, option C, 139. Yes, Priyanshi, you're right. C is the right answer. Can you please tell me a former CGI who has got Padma Vibhushan? Okay. I have discussed in this class in detail about the Padma Awards, all the winners of the Padma Awards. One is a former Chief Justice of India. He has got Padma Vibhushan, India's second highest civilian award. इसमें मैंने तीनों डिटेल बताया है. Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Padma Shri. I have discussed in detail. One former CGI, Justice J.S. Khair. J.S. Khair. ठीक है. Yes, Priyanshi. सुखबीर सिंह खेर नहीं नाम है, J.S. Khair नाम है उनका. ठीक है. Okay. So just remember it, है ना? That is what you should know. Let's move on to the next one. Recently, 2 Indian cities were added in wetland accredited cities of the world. What are those? Please tell me. Here the right answer is option C. Actually, I'm sure you must have heard Udaipur is called a city of lakes, and this was asked in CUET twice, I think. City of lakes. Yeah, बहुत सारे lakes हैं. Lake Pichola, Fateh Sagar, and other lakes. Yes, C is the right answer. Yes, Nitin, Ananya, Priyanshi, you all right. And Indore is famous for the cleanest city of India for many years. So C is the right answer. Okay. Indore, Udaipur is in Rajasthan. Indore is actually in Madhya Pradesh. So C is the right answer. Yes. So this you should be knowing about. What is Ramsar? I have discussed in detail about Ramsar in this class. Isko search karna. Earlier, we had 85 Ramsar sites, 4 has been added. So now we are having 89 Ramsar sites. Okay. Okay. Let's move on to the next one. Niti Aayog report titled Fiscal Health Index was released by which person? And which state is at the top and which state is at the last? So it was released by Dr. Arvind Panagaria. This report was released. Former Vice Chairman of Niti Aayog. And which state is at the top? Yes, very good. A is the right answer. इसमें top में कौन सा state है? So the top में rank 1 is Odisha in a best state में, and last में is Punjab. But you have to be careful. Only 18 states were actually there in this report. So ideally we are having 28 states and 8 union territory. But this index was brought only by taking care of 18 states. Yes, video of GI Tech I have made 5-6 months back, Nitin. You can watch it. It's available on our YouTube channel. Just search GI Tech Career Launcher Law Entrance on the YouTube. You will get that. Okay. The next is Priyanka Chopra and Guneet Monga bagged a film. Actually was nominated for Academy Awards. Academy Awards means Oscar Award, but in the final it could not win. What is the name of the award? What is the name of the film? Yes, Anuja. A is the right answer. Very good. Priyanshi, Krishi, Sachdeva, Nitin, you are right. Okay. So 97th Academy Awards, or what we call it as 97th Oscar Awards, given in 2025.
So A is the right answer to this question. इसको जाके देख लेना आप, Oscar 2025 career launcher, you will get this video. Please go and watch it. ठीक है, that is what you should be knowing. ठीक है, okay. Let's move on to the next one. Chinese startup has brought the concept of large language model LLM है ना, AI model जिसको कहोगे, कौन सा वाला है? Which is actually a challenger to ChatGPT. Yes, DeepSeek है ना, बहुत famous था, news में था. Yes, very good. A is the right answer to this question. Let's move on to the next one. Which of the following state has started producing organic fish? Country's first organic fishery cluster now start हुआ है. This state is also famous for being actually the first organic state of India. First organic state. Yes, the right answer is option A, Sikkim. Yes, Priyanshi Goyal, Rishi Sasdeva, you both right. A is the right answer to this question. Right? The first organic state is actually Sikkim. That is what you should be knowing. A is the right answer. Yes. Right? So fisheries may be organic fisheries, maybe Sikkim is actually the first. Okay. The next is ISRO has recently launched its 100th satellite. I think in the March of February. And what is the name of that? NVS-02. Yes, very good. Nitin and Priyanshi Goyal, you both right. B is the right answer. Okay. Okay. Actually, it was not very much successful. Yes, but just remember it. This is the name of the rocket. And 100th launch will get. Okay. Can you please tell the reason? Reason I don't know. I need to check it. The reason why it failed. NVS-02. Let me check it. NVS-02 was failed. After failing to execute orbit raising maneuver due to valve malfunction. Valve malfunction की वजह से. Orbit raising operation. That is what they have said. Due to valve malfunction, it got failed actually. Okay. Okay. It got. Due to valve malfunction, the second satellite in VS series. Okay, that is the reason. And this was the 100th launch. Okay. I think Manthan is more than enough. Weekly Manthan. So Satish Dhawan Space Center Sriharikota se launch kiya gaya tha. That is what you should be knowing about. The next is who among the following sports person was honored with prestigious Sir Garfield Sobers Trophy for ICC Men's Cricketer of the Year. Garfield Sobers बहुत famous cricketer थे. सोनी के नाम पर ये अवार्ड रखा गया. So the answer to this question is Jasprit Bumrah. D is the right answer. Yes. है ना, आप देख सकते हो. Yes, very good. People are writing. Yes, D is the right answer. Let's move on to the next one. NASA का एक बहुत famous mission है to study on an asteroid, and the name of the mission is Osiris Rex. इस तरह करके लिखते हैं Osiris Rex. ठीक है. Please tell me which asteroid it is researching on. उस asteroid का नाम क्या है? Yes, Bennu. C is the right answer. Very good. Nitin, Priyanshi, Namra, you all right. हाँ, ये है actually Osiris Rex mission, first US mission to collect sample from asteroid and all, bringing back on Earth 20. अच्छा, इसको वापस ले आए to sample from asteroid and deliver it to the Earth on 24 September 2023. So they have brought back the sample also, of course. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. Let's move on. I hope you are aware when we are talking about asteroid belt, it is between Jupiter and there is somewhere Mars. ठीक है. So Mars और Jupiter के बीच में you will find asteroid belt. हो सकता है पूछ लें maybe because asteroid is in the news. Yes. Let's move on to the next one. ICC International Cricket Council has confirmed that this person has stepped down as the chief executive officer of ICC. हाँ, Bennu asteroid का नाम है. Yes. Geoff Aladis has resigned. So C is the right answer to this question. Steps down as the CEO of International Cricket Council. It is headquartered in Dubai. Okay. UAE. Okay. C is the right answer. You can see these are the, I checked it today. So chairman is Mr. Jay Shah. Deputy chairman का नाम कमचा. CEO अभी भी नहीं आया है. ठीक है. There is no CEO. General manager वसीम खान इतना नहीं पूछेंगे. ये this is important. ठीक है. है ना, हेडक्वार्टर दुबई में.
The next one is WHO has congratulated this country for actually eliminating onchocerciasis. This became the first country in Africa to eliminate and fifth in the world. Which country are you talking about? The right answer is Niger. A is the right answer. ठीक है, fifth country in the world. ठीक है ना? It is a river blindness इसको कहते हैं ना? Okay, that is what you should be knowing. और है ना? यहाँ पर इंडिया है. देखो ये नाइजर और ये नाइजीरिया है, दो अलग कंट्री है. You have to be very careful. And here the answer is Niger. The north one is Niger and the south one is Nigeria. So Niger है, ठीक है? It is a country in Africa. The next one is Global Capability Center in Hyderabad is being set up by which organization or which company? The right answer is MACD, McDonald. C is the right answer to this question. ठीक है? And first GCC in India. ठीक है? So इसमें और ज्यादा कुछ जानना नहीं, just remember it, Hyderabad. The next is अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि what happened was 2nd February is celebrated as World Wetland Day. So this year in 2025 we were having 85 Ramsar sites, 4 more got added. Now it is 89. So C is the right answer to this question. Okay. So I've made in detail this video where I've discussed about Ramsar sites. है ना? What is the function of GCC, Global Capability Center? देखो उसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा कि एक बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी जिसमें देयर बी अच्छा, आप जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर मैकडॉनल्ड है तो आप मैकडॉनल्ड का आप ऐप डाउनलोड करोगे अगर आपको फूड मंगवाना है. ऐप के डेवलपर्स होते हैं उसके बैक एंड में, राइट? तो कौन डेवलप करते हैं? उनके लिए लोग हायर किए जाते हैं. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. सो यू हैव टू हायर पीपल, सो यू हैव टू हायर, देयर शुड बी एन ऑफिस फॉर दैट. सो दैट ऑफिस इज सेट अप, दैट्स कॉल्ड एज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर. ठीक है? ये अगर आपको मैकडी को यू हैव टू लेट्स से सेट अप डिफरेंट मोर number of franchises in India, so that should be managed from India, है ना? इंडिया के अंदर ही मैनेज किया जाए. So उसके एक ऑफिस होनी चाहिए. So that office is this. ठीक है? You got it, है ना? That is the idea. ट्रेनिंग सेंटर भी हो सकता है. Yes, it can be a training center also. Plus, it is the place where decisions can be taken. It is a place where actually you can say the engineers can be hired for different purposes and all, है ना? For maintaining website, app, etc. बहुत सारी चीज होती है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में, है ना? It can be the center for actually keeping raw materials, वो भी हो सकता है. खैर, name the former cricketer who will be honored with BCCI Lifetime Achievement Award. And the right answer is yes, Sachin Tendulkar. Yes, Priyanshi, right. A is the right answer. है ना? ये अवार्ड का नाम है, आप चाहो तो याद रख सकते हो. Yes, Namra Harsh Sharma, you are right. Krishi Satyam. The next is Indian Air Force Group Captain has made history. He'll be first Indian astronaut to travel to the International Space Station. Be careful. It is not writing first Indian to go to space, because first Indian to go to space was Rakesh Sharma, sent by USSR, Soviet Union. But he is going in International Space Station. मतलब सिर्फ स्पेस में नहीं जा रहे, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगे, है ना? Which is of course in low Earth orbit, जहाँ भी कुछ दिन पहले we had seen Sunita Williams going. But इसीलिए इंडियन क्यों लिखा? Because Sunita Williams is not an Indian citizen. She is actually Indian origin lady. इनका इंडिया से लिंक है, मतलब लेकिन वो इंडिया की सिटीजन नहीं है ना, इसलिए इंडियन एस्ट्रोनॉट है सुधांशु शुक्ला, है ना? So the right answer is A, है ना? So here is Captain Subhanshu Shukla, and he will come back, and he has been sent through Axiom 4 mission. ठीक है? ये NASA और Axiom is a private agency of USA. They have sent it, है ना? So actually, why it is important? Because when he will come back, he will be sent to Gaganyaan mission, because this is our plan. This is India's plan that we will be sending a mission to the space also. So अगर कोई एक ऐसा बंदा है who has already gone earlier, then it is a good thing ना कि one person will be experienced, है ना? ठीक है? So Subhanshu Shukla would be going, है ना, very soon. Remember other names नहीं, other name याद रखने से होते हैं. I don't think they'll be asking कि बाकी 3 लोग कौन है. I don't think so. Subhanshu Shukla can be asked. Yes.
They'll ask you Subhanshu Shukla recently in news is what, or who is the name of the Indian Air Force officer sent and all to examination. Okay. खैर, let's move on further. देखो बाकी लोग का नाम चाहो तो याद कर सकते हो, but I don't think they'll be asking. ठीक है, बस यही नाम याद रखना. The next is world's busiest airport. Has been sent नहीं, I think अब एक बार चेक कर लीजिएगा. अब ये पूछे कि लोग गए हैं कि नहीं अभी तक. They'll be sending in मई 2025 तक तो था प्लान. Please check it whether they have gone or not. ठीक है. They're in a process. शायद जा चुके हैं, मैं कहीं देख रहा था, अब एक बार देख लीजिएगा उसको. The right answer is Dubai, है ना? Busiest में Dubai. So B is the right answer. Okay. Let's move on. Yes, very good, very good. Best airport is Changi Airport, right? Is ये पूछ सकते हैं, rebel leader Ahmad al-Shara is the rebel leader of which country? Recently in news, he came to power after toppling Bashar al-Assad. अगर ये लिखा होगा तब तो आप पकड़ लोगे कि सीरिया में है ना? But if Bashar al-Assad is not written, then perhaps it would be difficult. But you should remember Ahmad al-Shara. Okay. So he is actually Syria, and I hope you are aware. So here is India. This is Syria. The capital is Damascus. And for many years, Bashar al-Assad was ruling from 2000 to 2024. Last year, December. Here is Syria. Syria capital Damascus, and he was overthrown in the sort of a coup, whatever you can say, a revolt type thing, and he changed his name and all. Golani, yes. इनका ओरिजिनल नाम भी बता दें. गोलानी. Let me write full name. Yes, his name is Abu Muhammad al-Julani or Golani. Yes, he has changed the name. Yes, somebody has written also Krishi Sasdeva, right? Very good. You know it. Now the next is the new tax exemption limit under new tax regime, and I hope it is very easy. Actually, if it is written, option B, it is go ahead. अगर कहीं पे 2.75 लाख लिखा है तो भी सही होगा, because they give 75,000 standard deduction also. So if maybe in exam कहीं पे 2.75 लाख लिखा तो डरना नहीं है, ठीक है. So B is the right answer. That is what you should be knowing. Tax exemption limit मिला था because 1st February को we had seen budget, so that is why it was in the news. The next is what is the FDI limit for insurance sector as per union budget? FDI means foreign direct investment. यानी एक कंपनी में कितना तक FDI लिमिट किया सकता है, कितना शेयर खरीद सकती है फॉरेन कंपनी. So earlier it was 74%, now it has been increased to 100%. So the answer is D now. Yes, means the foreign company can entirely buy the insurance company, an Indian insurance company, and D is the right answer. The next is World Wetland Day. I have told you 2nd February. ये कई बार एग्जाम में पूछा था. World Wetland Day because on 2nd February 1971 Ramsar Convention was signed. I have taught what is Ramsar. ठीक है. What is the theme of World Wetland Day this year? Yes, very good. People are writing. Protecting wetlands for our common future. B is the right answer. ठीक है. This question. The next is which of the following country recently eliminated Gambianese form of this disease, trypanosomiasis, as a public health problem? बताओ. The right answer is Guinea. So C is the right answer. And the Gulf of Guinea यहाँ पे C is the right answer. यहाँ पे this is Guinea country, ना. So that is what you should know. In Africa, ये Africa है, and on the west coast you will find this. So the right answer is C. Yes. Let's move on further. ICC Under-19 World Cup T20. Who won? I mean, India won, of course, by defeating which country? ये बताना. So ICC Under-19 Women's T20 World Cup. Under-19 मतलब less than 19 years of age, Women's T20, है ना? So India won by defeating which country? The right answer is C, South Africa. ठीक है. आप देख सकते हो India won by defeating South Africa. So that is what you should be knowing. Okay. So ये जनवरी फरवरी में हुआ था, मलेशिया में ऑर्गेनाइज किया गया था. तो यहाँ लिखा है it was organized in Malaysia. So कभी कभी ये पूछ देते हैं कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया और ठीक है ना. India won it, and this is actually the name of the player of the series or player of the tournament.
most runs and player of the series में Gongadi Trisha. ठीक है, please remember. The next is Grammy Award for Best New Age Album 2025. I am saying because she's actually the I think cousin sister of Indra Nooyi, and Indra Nooyi is actually former Pepsi company CEO. The right answer is option C, Chandrika Tandon. Right. So याद रखिएगा, है ना? Indian American musician and entrepreneur Chandrika Tandon backs Best New Age Album Award in Grammy, है ना? And the work is Triveni, है ना? This is the name of the work for which she has got the award. ठीक है? And इनके बारे में लिखा है ना, she is the older sister, अच्छा अपनी sister है ना, of Indra Nooyi. That side becomes more important. है ना? ग्रामी अवार्ड के बारे में चाहो तो पढ़ सकते हो. It is given from America. That is more than enough. उतना डिटेल रिसर्च नहीं करना है कि रिकॉर्डिंग एकेडमी देती है. That is more than enough. हाँ, JMI के लिए भी यूजफुल है, ऑफ कोर्स. Okay, let's move on. What is the point? What is the significance of Point Nemo recently in news, where 2 Indian Navy officers crossed, and why? In which reference we are talking about these 2 Indian Navy officers? Navika Sagar Parikrama, we had discussed. Navika Sagar Parikrama, we had discussed. Phase 2, where the 2 Navy officers are circumnavigating the Earth. Circumnavigating मतलब पूरा एक चक्कर लगाना, है ना? And it is actually the farthest point from the land, remotest point on the Earth. So C is the right answer. यानी जमीन से सबसे ज्यादा दूर है ना? And they are going actually by this ship INSV Taranir. This also we had discussed. Dilnaki and Rupa. Yes. So जैसे यहाँ इंडिया है, तो ये पैसिफिक ओशन है. तो आई थिंक समवेयर हियर यहाँ पर है पॉइंट नीमो. मतलब किसी भी लैंड से सबसे ज्यादा डिस्टेंस वाला वाटर बॉडी का एरिया ना. सो दिस इज पॉइंट नीमो लाइक दिस. So this is the area, this is the place on the water body which is the farthest from the land. That is what the idea is. तो अब बोलो इसका सर कोई सिग्निफिकेंस है? ऑफ कोर्स रिसर्च पर्पस के लिए वेरी मच सिग्निफिकेंट. ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड इट बिकॉज़ से रिसर्च किया जाएगा ऐसा बायोडाइवर्सिटी अगर लैंड से दूर है तो कैसा होता है, क्या होता है रिस्पांस ऑन. खैर, सो एक्चुअली दीस 2 ऑफिसर्स स्टार्टेड लाइक दिस, और इस तरह कुछ करके दे हैव गॉन एंड ऐसे घूम के फिर वापस दे विल कम बैक, है ना? पूरा एक गोल चक्कर लगाना है. सर्कमनेविगेशन ऑफ अर्थ through this ship called as INSV Tarini. The name of the plan is actually Navika Sagar Parikrama is the name of the thing. No. Lieutenant Commander Dilnaki and Rupa A. हाँ, satellites में डम किया था. Yes, right. कृषि सर के बारे में. PM धन धान्य कृषि योजना is to increase the productivity of agriculture in these low productivity districts, low agriculture productivity districts. ठीक है. So how many districts are there? कितने जिला? The right answer is option C, 100 सेंचुरी. याद रखोगे. So पूरे इंडिया में 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है. उनको प्रमोट किया जाएगा so that there would be more productivity, so more farmer income etc. and all, है ना? आप लॉजिक लगा सकते हो उससे क्या क्या फायदा होगा, है ना? This is a part of budget enhance agriculture productivity 100 districts, है ना? That is what you should be knowing. Tata Steel Masters Chess Tournament 2025. Who won? Bada? Who has won it? R. Pragnanda. C is the right answer. Okay. So just remember it. And I hope you are aware he is a 19-year-old from Chennai. Just remember it. The next one is International Big Cat Alliance. This we have discussed so many times. April 2023 में inaugurate किया गया था. Because we had completed 50 years of Project Tiger, and now Big Cat Alliance includes not only Tiger but other similar type of big cat and a headquarter in New Delhi, India. ठीक है, that is what you should be knowing. ठीक है, तो ये big cats में Tiger, Lion, Snow Leopard, Leopard, Jaguar, Puma, Cheetah आता है. I think Jaguar and Puma are not found in India, but still we have taken that also into consideration. International Big Cat Alliance को ratification मिल गया 5 something states से. Now it has come into force. 5 या 6 कंट्री से चाहिए होता है. So that has been approved now. ठीक है, that is what you should know. है ना? Why did Panama withdraw from China's Belt and Road Initiative? मैंने separate class लिया. I have taken a separate class on Belt and Road Initiative. If you have not watched it, please go and search on YouTube. Belt and Road Initiative Career Launcher. Why? Because this is also a previous year question of CLAT. In one of the options they had given
Belt and Road Initiative, and it is very much prominent. It always comes in the newspaper. है ना? Withdraw क्यों कर लिया? Because of US and all. ना, so B is the right answer. देखो ये तो वीडियो है ना, इसको सर्च करना YouTube पे, you will get this. Please watch it. This is very important. Belt and Road Initiative बहुत ज्यादा important होता है ना? Panama withdraws why China is hinting at US role, है ना? मतलब इशारा ये किया जा रहा है कि अमेरिका की वजह से हुआ. That is what this Indian Express article says. The next is equivalent is a biennial. Biennial मतलब क्या होता है? Which happens every 2 years. Biannual नहीं लिखा है. So this is exercise which happens every 2 years. And a biennial military exercise between India and which country? Yes, the right answer is Maldives. A is the right answer. Okay. Okay. So it is India. This is Maldives. The capital is Malé. Okay. Okay. January, February में हुआ था. फरवरी में खास किया. The next is NASA's Sphere X mission. इसका गोल क्या है? What is the target of this? To study the entire sky in infrared radiation. है ना? So B is the right answer to this question. ठीक है. A spectrophotometer for the history of universe, epoch of ionization, ISIS explorer. ठीक है. मतलब वो पूरा they'll research about how the universe was formed, etc. है ना? So through infrared rays and all. ठीक है. That is what the idea is. The right answer is B. ठीक है. तो ये different rays होती है. I hope you are aware radio wave, microwave, infrared. तो इसमें वो लोग जो है research करेंगे in this band, infrared band. They'll do the research. That is what the idea is. ठीक है. The next is recently scientists have used IVF technology to produce world's first kangaroo embryo. Embryo समझते हो ना? मतलब please increase mic sound. ओ आवाज कम आ रही है क्या? समझते हो ना? मतलब see embryo मतलब जो child का जो first stage होता है ना, इतना तो जानते होगे थोड़ा बहुत है ना. अच्छा कंगारू जो होता है ना, marsupial होता है ना. These are actually in marsupial category. And कंगारू कहाँ पाया जाता है? कॉमन सेंस बताओ ऑस्ट्रेलिया. सो ऑफ कोर्स द कॉमन सेंस सेज कि जहां पर वो पाया जाता होगा चांसेस ज्यादा है कि वही रिसर्च किया जाता है ना. सो सी इज द राइट आंसर. ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू शुड नो. आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इसका मतलब क्या हुआ? बस इतना समझ लो कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर एक्चुअली फर्टिलाइज्ड इन लैबोरेटरी. इसको कहते हैं आईवीएफ टेक्नोलॉजी. हाँ, marsupials are animals having pouches, right? कृषि संदर्भ. ठीक है. So that is what you should be knowing. The next one is Zomato का आपने नाम सुना होगा. It is renaming it to what? हाँ, IVF मतलब outside the body. अगर in vivo fertilization होता है, अगर in vivo fertilization लिखा होगा तब inside body. In vitro मतलब outside the body in laboratory. Yes, very good. Food tech giant Zomato is now moving towards eternal. Yes, B is the right answer. Yes, PMC, Vidhi Mahajan, you are right. है ना? So ये आपको पता होना चाहिए. The next one is the world's first genetic modified horses. कहाँ बनाया गया? है ना? Genetic modification समझते हो ना? Genetic engineering is a advanced technology. अच्छा, please tell me one famous gene editing tool जो मैंने कई बार पढ़ाया. It comes in the newspaper, the Hindu newspaper again and again. हाँ, ये अर्जेंटीना में एक्चुअली बनाया गया. A is the right answer. हाँ, GM क्रॉप्स जो होता है जैसे जेनेटिक, जैसे बीटी कॉटन इंडिया में Bacillus thuringiensis से बनता है ना BT cotton. This is also an example of GM crop. This is the only crop that has been allowed in India till now. Yes, CRISPR-Cas9 is a very famous gene editing tool. ठीक है. Being developed. Actually, इसका काम क्या है? Gene edit करना. And this is the very top-notch technology, top-class technology. बहुत जबरदस्त discovery है CRISPR-Cas9. ठीक है. Yes. That is what you should be knowing. ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए. The next is yes. Now China has recently done a deal with Cook Island, and this country is having worry or is not very much is having this country has raised significant concern. हाँ, 2-3 साल पहले CRISPR पर नोबेल प्राइज मिला था, राइट प्रियांशी? हाँ, राइट. हाँ, देखो पता है क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कुक आइलैंड रिसेंटली इन न्यूज इज बिलोंग्स टू व्हिच ओशन और व्हिच वाटर बॉडी. तो क्या होगा आंसर? ऐसे ही पूछ सकते हैं घुमा के. सो हियर द राइट आंसर इज न्यूजीलैंड.
देखो एक्चुअली क्या हुआ था, है ना, कुक आइलैंड एंड ऑल, है ना। देखो यहाँ पर चाइना है, दिस इज कुक आइलैंड। अच्छा, आपको इसकी प्लीज रीड वॉच बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्लास ऑफ माइंड विच आई हैव ऑलरेडी शोन इन द क्लास। इससे आप उसको लिंक करके पढ़ सकते हो, इट माइट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ मैरीटाइम सिल्क रूट और मैरीटाइम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है कुक आइलैंड। नाउ व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट, ठीक है, यहाँ पर न्यूजीलैंड है, सो ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड इज नॉट वेरी हैप्पी। Why I'm discussing it, few years back, 2-3 years back, China did a deal with यहाँ पे एक कंट्री है सोलोमन आइलैंड, so that was asked in all the exam कि सोलोमन आइलैंड कहाँ पाया जाता है, ठीक है। So similarly now they have done a deal with Cook Island. New Zealand is not very happy. Maybe they Cook Island might allow the Chinese Navy ship to allow a station there. हो सकता है इसलिए unhappy हो। That is what you should be knowing. The next is Aero India show was inaugurated by Defense Minister Mr. Rajnath Singh in February. कहाँ पे? Yes, Bangalore. Yes, Rishi Amrata वाला विधि माध्यम। Aero India show, और इसका जो ये है थीम है runway to a billion opportunities. That is what you should know. और ये काफी फेमस हुआ था यालाहांका एयरबेस, राइट प्रियांशी? हाँ, so that is what you should be knowing. The next is Cyclone 2025 is a joint military exercise in Rajasthan done recently between which two countries? The right answer is India and Egypt. A is the right answer. ठीक है, to this question. Cyclone. तो कैसे मैं, this is my logic if you can remember it. Cyclone E से खत्म हुआ तो E से Egypt, ठीक है। कुछ ऐसे आपको लॉजिक कुछ बनाना पड़ेगा, something like that to remember it. So I have remembered. जैसे एक है गरुदा शक्ति, आई से एंड होता है तो आई से इंडोनेशिया। सूर्य किरण, एन से एंड होता है, एन से नेपाल। सम ऑफ देम में काम करता है, नॉट ऑलवेज। आई हैव ट्राइड टू मेक सम ऑफ देम, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह बनाना पड़ेगा। जैसे एक है मैत्री करके, आई थिंक इस तरह कुछ स्पेलिंग है। सो ती से मैंने बनाया है, ती से थाईलैंड, ऐसे कुछ है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग यू कैन। फिर एक है मित्र शक्ति, ये देखना, आई थिंक ये श्रीलंका के साथ है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं किया सकता, आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट मैं ऐसे सोचा हूँ कि अच्छा इंडिया का सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, मित्र है, तो पास में होगा, लाइक दैट, है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक। जैसे सिलीनेक्स तो आसान ही है, श्रीलंका इंडिया नेपाल, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, तो सिलीनेक्स हो गया। फिर एक है सिम्बैक्स, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, दिस इज आल्सो इजी, ठीक है, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड नो। नहीं, सब में नहीं काम करता, ऑफ कोर्स इट विल नॉट वर्क इन ऑल द टाइम केसेस। और जैसे कि 10 तलिक, देखो मैं कैसे याद किया हूँ, उज्बेकिस्तान और इंडिया का है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये यूएस और यूजेड स्टार्ट हो रहा है, सिमिलर नाम लग रहा है, तो आई हैव रिमेंबर्ड लाइक दिस, ठीक है। तो वाई, बिकॉज कुछ तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा सो दैट यू कैन रिमेंबर, बिकॉज देयर आर सो मेनी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की याद रखना में थोड़ा सा ये करना पड़ता है, ठीक है। सो आई ट्राई टू, जैसे एक है खंजर, है ना, इस तरह करके एक देखना, ये किर्गिस्तान के साथ होता है। कैसे याद रखो, खंजर में के है और आर है, किर्गिस्तान में के है और आर है, बहुत कम कंट्री होता है, प्लीज चेक इट, नॉट कजाकिस्तान। काजगिन वो खंजर एक्सरसाइज, है ना, इंडिया एंड किर्गिस्तान, ठीक है। हाँ, के और आर, के से शुरू हुआ, आर पे एंड हुआ, बहुत कम कंट्री है जिसके नाम में के और आर हो, देखना, राइट। हाँ, मालदीव में नहीं काम करेगा केवल, है ना। सो खंजर, काजिंद, काजिंद करके, तो काज से कजाकिस्तान इंडिया, लाइक दिस। फिर इंदिरा, वेरी इजी है ना, इंडिया प्लस रशिया, लाइक दैट, ठीक है। विनबैक्स, तो वियतनाम इंडिया करके। आई नो दैट यस इट विल नॉट वर्क ऑल द टाइम, बट अगर 70-80% केस में याद रहेगा तो अच्छा ना है ना। ओके, यस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, है ना। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिग नेम्ड, पता नहीं इसका नाम सृजनम पढ़ेंगे, सृजनम पढ़ेंगे, आई थिंक। ये कहाँ लॉन्च किया गया? एम्स दिल्ली में एक्चुअली, सो सी इज द राइट आंसर, है ना। देखो बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है,
ये हॉस्पिटल से ही तो निकलेगा। बायोमेडिकल वेस्ट, व्हाट इट मींस, जो मास्क होता है डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है, ग्लव्स एटसेट्रा, या इंजेक्शन वगैरह का जो रेवेनेंट है, तो हॉस्पिटल ही में तो मिलेगा, ऐसे सोचो, है ना। ऑफ कोर्स उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो उससे इन्फेक्शन फैल सकता है ना, इट कैन स्प्रेड इन्फेक्शन, सो दैट इज व्हाई दिस हैज बीन मेड। तो ऑफ कोर्स दिल्ली में, वो दिल्ली में सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स दिल्ली माना जाता है ना, सिरिंजेस आल्सो, यस, इज द राइट आंसर, वेरी गुड। The next is Mr. N. Biren Singh. He was the Chief Minister of Manipur. He resigned, and then using Article 356, President rule was imposed. So he was the Chief Minister since 2017. And so D is the right answer. Very good. ये पूछ सकते हैं, who is the governor? So the governor is Mr. Ajay Kumar Bhalla. He had earlier served as the Union Home Secretary. ठीक है, so ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप जाओगे YouTube पे जाके सर्च करोगे मणिपुर CM resign career launcher monitors, you will get this video, ठीक है। The next one is corruption perception index. What is India's rank? The right answer is option C, 96, released by Transparency International. Okay, so that is what you should know, 96 India की rank. The next is World Government Summit कहाँ हुआ था 2025? Where it happened? So it happened in actually Dubai. Dubai UAE में जगह, UAE की कैपिटल अबू धाबी है जरूर, but it happened actually in Dubai. So A is the right answer. Yes, she goes right. ठीक है, that is what you should be knowing. और इसका थीम था shaping future governments. अच्छा, I hope you all are aware we have signed UAE के साथ इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया, वो है सीपा, Comprehensive Economic Partnership Agreement, and that is why we have seen rise of growth or interaction between India and UAE, and having a good trade etc. ना कह सकते हो। The next is Sunita Williams and Barry Wilmore were originally sent for how much? Starliner जो है ना बोइंग का, ये पूछ सकते हैं। अच्छा, sent by Boeing but brought back by SpaceX and NASA, है ना। तो ये ओरिजिनली गए थे 8 दिन के लिए, ऐसे याद रखो, they have gone for 8 to 10 days but they were there for almost 9 to 10 months. मतलब डे जो है ना वो मंथ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। So that is how you can remember. So A is the right answer. Okay, and they were brought back etc. by SpaceX, वही Elon Musk की जो स्पेस एजेंसी। हाँ, बोइंग का मामला कुछ गड़बड़ हो गया। एक्चुअली से रिलेटेड एक और टर्म हीलियम गैस लीक, ये पूछ सकते हैं। So because of Starliner witnessed this helium gas leak, because of which all these phenomena happened. ठीक है, मैंने से वीडियो बनाया है, if you are interested you can watch. The next is Tata Group Chairman Mr. N. Chandrasekhar and Bharti Group founder Dash were given UK's famous award, the Most Excellent of the British Order Civil Division Award. ये बस याद रख सकते हो कौन है Most Excellent Order of the British Empire Civil Division, इनको मिला है सुनील भारती मित्तल। A is the right answer, ठीक है। So A is the right answer to this question. Yes, Harsh Sharma, you are right. And Priyanshi Goyal, you are also right. Namra Aftab, you are right. Let's move on to the next one. Blue visa policy. A 10-year residence visa देंगे those who have worked for environment sustainability. अच्छा, अगर इसमें ग्रीन वीजा लिखा होता तो याद रखना आसान होता नहीं कि एनवायरमेंट से ग्रीन को कनेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ब्लू वीजा लिखा है। So but try to remember it, है ना। This was brought by UAE, United Arab Emirates. A is the right answer, ठीक है। Again, by yes, the signed CEPA also between the two, है ना। So blue visa system. The next one is actually yes, these two are very important. Vadhavan port we are building in Maharashtra, and Great Nicobar में Galathea Bay port are being constructed. So Galathea Bay को तो 13th major port declare भी कर दिया गया। Vadhavan को I think we are yet to declare, ठीक है। इस पर मैंने पोर्ट्स में मैंने क्लास भी ली थी, है ना, and both are planned to be completed by 2029, ठीक है। So D is the right answer to this question, ठीक है। Galathea Bay port, तो ग्रेट निकोबार का पार्ट यहाँ पर इंडिया है, मुंबई के पास यहाँ पर आपको बधावन मिलेगा, एंड ये है गैलेथिया बे, एकदम अंडमान निकोबार का जो लास्ट वाला है ना, ग्रेट निकोबार आइलैंड, वहां मिलेगा गैलेथिया बे पोर्ट, ठीक है। एकदम इंडोनेशिया के पास में, देखो एक बंदा ऐसे नहीं है, इंडोनेशिया के सिटी है, ठीक है। इट्स वेरी नियर टू दैट, द स्ट्रेटेजिक लोकेशन बोथ है। ओके, द नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 बाय स्पोर्ट्स स्टार एस अवार्ड।
हाँ, फेमस फॉर लेदर बैक टर्टल, राइट? कृषि संस्थान, वो जो गैलेथिया पे है ना, दिस इज फेमस फॉर लेदर बैक टर्टल आल्सो. सो कुछ रिपोर्ट्स भी आया था कि इट माइट इंपैक्ट देम एटसेट्रा एंड ऑल. सो द राइट आंसर इज मनु भाकर एंड पीआर श्रीजेश. सो इसका ए आंसर हो गया यहाँ पे, तो इस ऑप्शन के हिसाब से, है ना? दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. द नेक्स्ट वन इज स्पोर्टिको के हिसाब से वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट कौन है? व्हाट इज द राइट आंसर? The right answer is Cristiano. Yes, Cristiano Ronaldo is the right answer. ठीक है, यहाँ पे देखो फोर्ब्स के हिसाब से भी, स्पोर्टो रिको के हिसाब से भी, ऑल फोर्ब्स भी पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स. सो दैट इज व्हाट यू शुड नो. The next one is Elon Musk का एक बहुत फेमस AI चैटबॉट उन्होंने लॉन्च किया. ये काफी न्यूज में था उस टाइम पर. और सरप्राइजिंग इसका ना अपना एक ट्विटर अकाउंट है और एक्स अकाउंट जो भी कह लो, एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्रोक, है ना? ग्रोक 3. और इसमें बात ये कि इट इज सेड कि इट इज हैविंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर, कि नॉर्मल फॉर्मल आंसर नहीं करता है, थोड़ा मजाकिया भी आंसर कर देता है, समथिंग लाइक दैट, है ना? कोई एक्स जो है वही जो पहले ट्विटर्स को कहते थे, नाउ इट इज कॉल्ड एज एक्स. सो से कनेक्टेड भी, इट्स हैविंग इट्स ओन एंड डेवलप्ड बाय XAI. The next is BRICS summit. We have discussed yesterday, last जो जनवरी मंथ ये करंट अफेयर्स हुआ था, where I discussed that BRICS summit में we are having 5 new countries. ठीक है, मैंने आपको बताया भी था. So Brazil, Russia, India, China originally था, South Africa got added later on, plus I square, E square, UAE, 5 more countries, है ना? तो ये एक हो गया. E square में इजिप्ट और इथियोपिया, ईरान और इंडोनेशिया. ठीक है, सो कहाँ हो गया इस बार? The right answer is Brazil will be hosting. So starting से BRICS B से स्टार्ट होता है, तो याद रख लीजिएगा, है ना? So B is the right answer to this question. रियो डी जेनेरो अगेन वही, यहाँ बहुत कुछ होता है. रियो डी जेनेरो में बहुत सारे समिट होता है. कैपिटल से ज्यादा तो यही फेमस है ना? बेलेम में नहीं, बेलेम में कॉप 30 होने जा रहा है, वो इन्वायरमेंट समिट होने जा रहा है बेलेम में, UNFCCC का, नवंबर में. ये ब्रिक्स की बात हो रही है. ठीक है, यस. The next is इंडिया एंड जापान के बीच जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो, यू कैन रिमेंबर इट, आई नो इसमें कुछ बनाया नहीं जा सकता, बट यस, द राइट आंसर इज सी. देखो मैं बताता हूँ. वी आर टेकिंग एक्चुअली बुलेट ट्रेन फ्रॉम वेयर? जापान. ठीक है, सो जापान इज आवर गार्जियन. दिस इज जस्ट अ वे टू रिमेंबर एज फार एज बुलेट ट्रेन इज कंसर्न. क्योंकि हमारे पास बुलेट ट्रेन नहीं था, ठीक है, तो बुलेट ट्रेन के मामले में जापान हमारा गार्जियन हो गया, हमने उनसे मांगा. तो जस्ट रिमेंबर लाइक दैट. दिस इज जस्ट अ वे टू रिमेंबर. अगर एग्जाम में कभी कभी ये सब चीज स्टोरी याद हेल्पफुल होती है, स्ट्राइक करती है एग्जाम में, अरे हाँ सर ने बताया था. ठीक है, सो दैट इज द ओनली रीजन. ठीक है, जस्ट टू रिमेंबर इट. सो सी इज द राइट आंसर. Okay, yes. The next one is recently Jotham Napat has been elected as the new prime minister of which country? और एक्चुअली इस कंट्री में हुआ ये था कि मिस्टर ललित मोदी इज एक्चुअली IPL के जो फाउंडर थे, and he had applied for the citizenship. He had I think got also, but later on rejected. भाई बनातू आइलैंड कहाँ मिलेगा? Which water body? हाँ, पैसिफिक ओशन में. ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर. तो ये जोथम नपाट साहब ने ही रिजेक्ट कर दिया था. यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पर वनातू आइलैंड. तो हो सकता है न्यूज में तो पूछ सकते हैं, वनातू आइलैंड 2 रीजन से न्यूज में था, है ना? टैक्स हेवन वगैरह भी होता है. हाँ, यस यस. चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये पता है आई थिंक AILET वगैरह का फेवरेट टॉपिक है, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर. हु इज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर and how many members are there in election commission of India? ठीक है, article 324 election commission of India, 3-member body comprising of chief election commissioner and 2 election commissioners. Who is the chief election commissioner? Mr. Gyanesh Kumar, है ना? This is the right answer, है ना? Rajiv Kumar had retired, so now we are having, so he is the chief election commissioner and these 2 are the election commissioners. इन्हीं के नाम पूछेंगे, Mr. Gyanesh Kumar.
हाँ 3 होते हैं, बीच में एक बार चेंज भी किया गया था रूल, राइट? हाँ, बट वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, बट जस्ट रिमेंबर इट, करेंटली द मैक्सिमम I mean there are 3 election 3 member body, है ना? Election Commission of India is a 3 member body. The next is Delhi's 4th woman chief minister, and I hope you all are aware recently in February elections happened where BJP won, and that is why we are having a new chief minister, and she is actually the 4th chief minister of Delhi, Rekha Gupta, है ना? And leader of opposition LOP लिखते हैं ऐसे, is Atishi from Aam Aadmi Party, who was earlier the chief minister for a few months, है ना? So C is the right answer, ये पता होना चाहिए. Okay, let's move on. Open Air Art Wall Museum recently inaugurated of IMD. देखो, Indian Meteorological Department, इसका काम क्या होता है? प्रेडिक्ट करना. क्या प्रेडिक्ट करना? मेटेरोलॉजी से रिलेटेड, मतलब साइक्लोन कब आएगा, रेनफॉल कब होगा, होता है ना, है. That is what you should know. So that first was Sushma Swaraj, second was Sheila Dikshit, third was Atishi, and the fourth one is Rekha Gupta, right? Very good, Krishi Satyabaha. So we have completed 150 years, ठीक है? So तो ये तो इमेज है ना, ये सब देखो उसमें दिखा भी रहे हैं, ये सब है ना, कि गर्मी हीट वेव्स का फोटो है, इसमें ठंड का है. तो ये IMD जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इनकी 150 एनिवर्सरी हुआ है, ठीक है? सो इसमें हम लोगों ने एक ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है? So that is what you should know. Dr. Jitendra Singh, he is Dr. Jitendra Singh, he is a minister also. He was invited there. Yes. अच्छा, एक चीज और है जिसका 150 ईयर हुआ है, बता सकते हो? There is one more thing. अभी ये MH सेट के एग्जाम में पूछा था ये. Anyone? Oldest stock market of Asia. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ठीक है. एंड इट्स सेंसेक्स जो इसका इंडेक्स होता है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड इट. यस, प्रियांशी कृषि सत्यवाई, यू आर राइट. यस, पूछते हैं, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज होरून इंडिया रिच लिस्ट रैंकिंग निकालता है, इसमें कंपनी विद मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, यानी वैल्यूएबल वैल्यूएशन के मामले में, या जिसको आप लिखते हो एम कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन, total value of shares. If you have watched Shark Tank India, I'm sure you must have heard these terms. कौन है टॉप पर? Reliance. Yes, Priyanshi, right. Harsh Sharma, right. Reliance is on the top. Most valued company in India. फिर TCS, HDFC, अब देख सकते हो, ठीक है? अच्छा, अगर कोई कंपनी, देखो इन लोगों को तो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है. If a company gets $1 billion valuation, इसको क्या कहते हैं? इस कंपनी को $1 billion, अगर $1 अगर 86 है तो समझ लो 8,600 करोड़ का अगर वैल्यूएशन है, तो उसको क्या कहेंगे? If $1 is 86, I don't know कितना है, $1 कितना चल रहा है? $1 in rupee 85.55, चलो 86 मान के, यूनिकॉर्न कहते हैं. यस, अगर $10 बिलियन हो जाएगा तो डेका कॉर्न कहते हैं, ठीक है? यूनिकॉर्न, ये सब न्यूज में रहता है, यूनी सिंगल है ना. अब ये सब देखोगे यूनिकॉर्न से बहुत ऊपर पहुंच गया, ठीक है? आप देख रहे हो यूनिकॉर्न इज वे अहेड ऑफ यूनिकॉर्न, ठीक है? ओके, द नेक्स्ट वन इज अनंत, है ना? Recently unveiled its large, this company has unveiled its campus Ananta in Bangalore. Yes, Priyanshi, right. Google is the right answer. He is the right answer to this question. Okay. Yes, Harsh Sharma, you're also right. Polarized moonlight first animal किसने यूज किया था? अभी एक्चुअली सेकंड के लिए न्यूज में था. Yes, dung beetle is the right answer. So B is the right answer. First animal was dung beetle. और न्यूज में होता है, द हिंदू की जो न्यूज आई थी, द सेकंड एनिमल के लिए न्यूज आई थी, ठीक है? सो सेकंड एनिमल जो एंट के लिए है, बट फर्स्ट पूछा जा रहा है, सो इट इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड. यस, प्रियांशी, राइट. हाँ, तो आप देखोगे नॉक्टर्नल मतलब जो रात में जगते हो, है ना, लाइक आउलेट्स, है ना? सो इंक्लूड इंसेक्ट्स, बीज फॉलो द मून्स पोजीशन. हाँ, where they go, but the moon boxes. So now for the first time scientists have found 2 nocturnal bull ant species, है ना, make their way at night with the help of polarized moonlight, ठीक है? So this is only the second case. तो फर्स्ट वाला जो है अगर पूछा जाए, so the answer is dung beetle, ठीक है?
पोलराइज्ड मूनलाइट, ये क्या होता है? इवन आई नीड टू स्टडी इन डिटेल, लेट मी चेक। पोलराइज्ड का यहाँ पे क्या मतलब होगा? लाइट मीनिंग, अच्छा, अर्थ के एटमॉस्फेयर से इंटरेक्शन होता है। ओके ओके, पोलराइजेशन एक फेनोमेना होता है फिजिक्स में। ओके, ये थोड़ा हाई लेवल की चीज, बट मैं थोड़ा सा बताता हूँ। पोलराइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट, है ना, जो लाइट्स का इंटरफेरेंस होता है, दैट्स कॉल्ड एज पोलराइजेशन। तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकरा के होता है, उसकी लाइट जो रिफ्लेक्ट होके आती है, दैट इज व्हाट यू शुड नो, है ना। तो वो, हाँ, डिमर मूनलाइट, हाँ। तो बेसिकली इट इज हेल्पफुल फॉर दीज इंसेक्ट्स टू एक्चुअली नेविगेट, ठीक है, दैट इज आइडिया। उनको मूव करने में रात के अंधेरों में आसानी होता है। New FBI director by US Senate. What is the right answer? बताओ। The right answer is, his photo is there. Kash Patel, very very important because he's an Indian origin person. Yes. हाँ, बैट में अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, तुमको तो नजर नहीं आता है ना, तो वो इको के से रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। हाँ, समथिंग सिमिलर टू दैट, आप समझ सकते हो, ठीक है। The next one is fastest Indian bowler, देखो यहाँ पे इंडियन अब आ गया, to reach 200 ODI wickets. लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडियन की बात नहीं की थी, है ना, लास्ट में तो जनवरी वाले करंट अफेयर्स में। Fastest Indian bowler to reach 200 ODI wickets at present is Mohammad Shami. C is the right answer. ठीक है, ठीक है। Okay, the next one is a chief economic advisor. He is instrumental in publishing economic survey and his extension. I mean, he has got 2 years extension. Which person is being talked about? Yes, Mr. V Anand Nageshwaran. जब बजट वगैरह पेश किया था, इकोनॉमिक सर्वे आता था, इनका नाम काफी आता है, ठीक है, सीईए का नाम। Yes, very good. The next is second principal secretary to Prime Minister. He was appointed. Earlier, he was serving as an RBI governor till last year. So he completed his tenure of 5 + 1 6 years, and then now he has been appointed as the second principal secretary because we are already having one principal secretary, whose name is Mr. P.K. Mishra. He is the first principal secretary, and Shakti Kanta Das is the second one. And the new RBI governor will be having it's Mr. Sanjay Malhotra. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन आई थोड़ा सा जो होता है ना, आई फील कि हाँ, ये थोड़ा सा दिस कैन बी आस्क्ड, वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट। एक्चुअली ये दिस इज फर्स्ट, प्लीज आंसर इट। Majorana 1 is the right answer. Please read about this, है ना। ये माइक्रोसॉफ्ट का क्वांटम चिप है, एंड दिस इज एक्चुअली, देखो एक्चुअली होता क्या है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग होती है ना, क्यूबिट्स वगैरह, ये क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी या जो भी कह लो, दिस इज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। मतलब आप ऐसे समझ लो, जो क्वांटम कंप्यूटर होता है, दिस इज मच 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 मोर फास्टर देन सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज कि साइंस के फील्ड में बहुत जबरदस्त डिस्कवरी मानी गई है, Majorana 1, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। So it is a chip manufactured by M से Microsoft, M से Majorana याद हो जाएगा, हो सकता है 4 ऑप्शन दे दे, who has manufactured it, Microsoft, Google, like that. So M से Majorana 1, so M से Microsoft. The next is men's cricketer of the year, men's test cricketer of the year, ICC honor किसको दिया गया? Right answer is option D, Jasprit Bumrah. ठीक है, that is what you should know. ठीक है, so we are ending this class here. This is all about today's class. Please subscribe to the channel, press the like button, share this video. Thank you everyone, thanks for watching. Have a nice day.